सत श्रीकाल आदाब, दिस इज एमडी मनु दत्ता फ्रॉम द टीम ऑफ आरडी एंड एमडी फ्रॉम टीम आईसीसी इमिग्रेशन। और आज इस वीक की इमिग्रेशन में क्या अपडेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ जी। एंड इमिग्रेशन तो बड़ा हॉट चल रहा है इस टाइम पे, बिकॉज lot of things, lot of rumors, lot of new things are showing up. There is a lot of tension as well between India and Canada at this moment. So हर चीज़ इस टाइम पे खासकर साउथ एशियंस को और खासकर इंडियंस को इम्पैक्ट कर रही है। एंड ये इम्पैक्ट जो अभी ये लंबे अरसे तक रहने वाला है, बिकॉज आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब ऐसी र्यूमर्स, ऐसी टेंशन्स क्रिएट हुई थी इंडिया और कनाडा के बीच में, दैट वाज इन सितंबर ऑफ 2023। तो वो बहुत अरसे तक उसका इम्पैक्ट लोगों को फील हुआ था, खासकर इंडो कनेडियंस को जो कनाडा में है या जो कनाडा में जो इंडिया में है, जो एस्पिरेंट्स हैं कनाडा आने के लिए, उनको भी फील हुआ था, और जो इंडियन कैनेडियंस कनाडा में भी हैं उनको भी काफ़ी अरसे तक वो चीज़ें फील हुई थी। अब time will tell how long this thing is going to last. Maybe it gets escalated more. Maybe good sense prevails and things die down. We are just ordinary spectators, and we can just see what the big nations decide to do. जो अगर काउंसलर सर्विस कम होती है, काउंसलर्स मूव होते हैं, काउंसलेट स्टाफ कम होता है, चाहे वो इंडियंस का कनाडा में या कैनेडियंस का इंडिया में, तो वो वीज़ास को तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। और ख़ासकर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो वर्क परमिट्स पे आने वाले हैं, जो विजिटर्स पे आने वाले हैं, जो इन कनाडा से इंडिया से कनाडा आ रहे हैं, तो दे विल गेट इम्पैक्टेड। तो इवन जो कैनेडियंस हैं और इंडिया किसी वीज़ा से पे जा रहे हैं, शादी है, घर में कुछ हो रहा है, कोई घर में हेल्थ इश्यूज़ है, किसी फैमिली मेम्बर का जाना है, तो दे विल ऑल गेट इम्पैक्टेड। और लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस एक्चुअली लास्ट। एंड अगर आप अब आज की डेट में बात करें इमिग्रेशन कनाडा के बारे में, तो रिसेंट एक सर्वे आया है। एज पर दैट सर्वे, जितने भी कनेडियंस, हर साल ये कनेडियंस को सर्वे किया जाता है, इस टाइम पे ऑलमोस्ट 58% पीपल इन कनाडा दे हैव सेड दैट दे डोंट वांट मोर इमिग्रेंट्स टू कम इन। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग कि इतनी बड़ी नंबर्स में लोग आके कहें कि वी डोंट वांट न्यू इमिग्रेंट्स टू कम इन। कैन यू इमेजिन दैट? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और जो पिछले साल यही नंबर्स था, वो इससे रिलेटिवली काफ़ी कम था, और 2022 में तो उससे भी कम था। 2022 में या उससे पहले पीपल वर इन फेवर ऑफ इमिग्रेंट्स, पीपल वांटेड के मोर इमिग्रेंट्स शुड कम इनटू द कंट्री। And it is only recently, because of I think lot of things happening here, लोगों ने कहा है कि we don't want more people to come in, which is really alarming. It's a mindset, it's a sentiment that is going around. And this mindset, this sentiment, how long this is going to last, I don't know. Is it because of the changing economy? Is it because of the economy going down? Is it because of the interest rate going high? I don't know. But that is what people are feeling. Okay, immigrants are no longer welcome in that big a way as they were 2 years back. And ये भी कितनी देर लास्ट करने वाला है, बिकॉज दीज थिंग्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन। बिकॉज इस साल 58%, 2023 में 44% लोगों ने जिनमें सर्वे किया गया था, दे सेड वी डिड वांट इमिग्रेंट्स। और 2022 में 27% लोग ऐसे थे, दे सेड के वी आर गोइंग टू हाई। 27 was manageable, 44 was manageable, 58 it doesn't seem normal, because that means lot of people, they have a negative feel of the immigrants at this moment. And hopefully this mindset also changes. I don't know how long it will take, but yes, it will take some time at this moment.
अब रिसेंटली बात करें कि ओंटारियो पीएनपी ने एक ड्रॉ आउट किया जी इस वीक में 17 अक्टूबर को। ये ट्रेड्स का ड्रॉ था और ट्रेड्स के ड्रॉ में ये जो इन्विटेशन दिए गए हैं 405 से लेकर 435 के स्कोर के बीच में दिए गए हैं 405 से 435 में। अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें वी हैव नॉट सीन एनी ड्रॉ सो फार। ओंटारियो की बात करें तो 23,000 के आसपास इन्विटेशंस दे हैव गिवन ऑलरेडी गिवन आउट इन 2024, so that means they are almost at the capacity. So hopefully we will only see smaller draws. और एक्सप्रेस एंट्री में जो लास्ट ड्रॉ हुआ था 539 के कट ऑफ पे गया था। 500 इन्विटेशंस 539 539 के स्कोर के ऊपर। 539 is not a score that a lot of people can touch. खासकर जो ग्रेड 12 वाले हैं दे हैव टू सीरियसली कंसिडर आइडियाज के कौन सी चीज़ उनके लिए काम करेगी, कहाँ पे काम करेगी, कौन सा प्रोविंस कौन सा सिटी उनके लिए काम करेगा, कौन सी म्यूनसिपैलिटी काम करेगी। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने वाले हैं दे शुड सीरियसली कंसिडर कि हमने कहाँ पे जाना है, कौन से ट्रेड्स में जाना है। गो इनटू दोज ट्रेड्स जहाँ पे ऑक्यूपेशन, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा एम्प्लॉयर्स ज़्यादा शॉर्टेजेस फील कर रहे हैं वर्कर्स की। गेट इनटू दोज प्रोग्राम्स ताकि आपकी जॉब सेफ्टी भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे और आप काम भी उन फील्ड्स में करें और इजीली जॉब अवेलेबल हो आपके लिए, आपको स्ट्रगल उस तरह से ना करना पड़े। इवन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ऐसी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। स्पाउजल के बारे में ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे हमारे दोस्त भाई बहन बच्चे ऐसे हैं जो शादी निकाह करके इंडिया से, पाकिस्तान से, मिडल ईस्ट से वापस आ रहे हैं एंड दे वांट टू स्पॉन्सर देयर लव्ड वंस। एक चीज़ का ख्याल कीजिए, दिस लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन कि स्पाउजल एप्लीकेशन है, वेरी सिंपल एप्लीकेशन, वी जस्ट सबमिट दैट एंड एप्लीकेशन थ्रू हो जाती है। बट स्पाउजल एप्लीकेशन में इट इज़ द रिलेशनशिप and the proof of relationship that really needs to be displayed. In spousal application, you need to show how did you actually meet your partner. Is it a love marriage? It is arranged marriage? Did you meet him or her over the internet, or was it some relative that introduced you? Was it some friends that introduced you? Was it some common circle of friends? How did you acquaint each other? And how did your relationship actually grow? How did you start meeting? You should need to display the entire thing कि आपका रिलेशनशिप कैसे ग्रो हुआ, उसके सारे प्रूफ्स, उसके सारे एविडेंसेस आपको प्रोवाइड करने हैं। और स्पाउजल एप्लीकेशन में कॉमन लॉ में एक चीज़ ज़रूर है, कॉमन लॉ में आपको यू शुड हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर एटलीस्ट अ ईयर बिफोर यू कैन सबमिट योर स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन। थर्ड इज़ अ कॉन्जुगल में होता है कि if there are some real issues that are stopping you from being together in your country and you apply for conjugal partners inside Canada, तो उसमें भी आपको proof of your relationship has to be submitted. So common law और spousal sponsorship के बारे में अगर आप application put up करने जा रहे हैं तो please make sure you do it right in the first instance. You do it right in the very first step. बिकॉज कई बार एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन पीछे भेज देती है। हमने रिसेंटली देखा है कि कुछ एप्लीकेशन दैट गॉट प्रोसेस्ड इन 3 to 4 months टाइम एज वेल बिकॉज दे प्रॉब्ली गॉट पिक्ड अप इन द पायलट। अदरवाइज जो प्रोसेसिंग टाइम है 11 महीने से लेकर 13 महीने का, 11 to 13 months का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है फॉर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप्स। एंड I have recently come across quite a few instances where the Canadian citizens were in a relationship with a person south of the border. तो American citizens के साथ, American residents के साथ, green card holders के साथ they were in a relationship. And eventually they were frequenting each other countries and officer finally, I have seen some officers not giving an entry for more than 10 days as well. So if such a situation has come up to you as well, make sure you get married or you show your relationship proofs, common law relationships or conjugal relationship, and put in a sponsorship application so that officer does not determine कि आप कितनी देर आपने कनाडा में रहना है या आपने यूएस में रहना है and how do you want to go ahead with the relationship. So
Proofs के लिए submit the application right in the first instance, or in case it's a second marriage, officer needs to see whether first marriage was a marriage of convenience or this is a marriage of convenience. They want to determine that both, they need to, you need to put in an application that supports that both applications, both marriages, both relationships were genuine relationships. And it is because you got divorced, that doesn't mean that they were and the intention was to get the spouse into Canada, or for you to come to Canada. Only thing is you have to show that it was a genuine relationship, but somehow the relationship did not work, जिसके करके आपको divorce लेना पड़ा, separation हो गई. So put in all those documentations, evidences, and the better worded your supporting documents are, your story is, ऑफिसर के लिए उतना आसान हो जाता है डिसीजन लेना. सो अगर कोई भी, इवन आप स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, यू प्लान टू गेट मैरिड, तो इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो कॉल आवर ऑफिस एंड वी कैन डिस्कस all things. Now going back to the queries. अनमूल्य यार प्यार, हाय अशोक कुमार फ्रॉम इंडिया. अशोक जी नमस्कार. दीपेंद्र कुमार जी नमस्ते. आने वाले हैं सर, हम कंस्ट्रक्शन लाइन को बोला था सर. आप कतर में हैं सर जी, कारपेंटर हैं इस टाइम पे, मेरे पास कारपेंटर की ओपनिंग्स हैं दीपेंद्र जी. ओनली थिंग इज कि आपको मुझे सबमिट करना है, प्रोवाइड करना है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स किस तरह की है, आपकी एज कैसी है, ताकि मैं आपको ऐसे सजेशन दे सकूं कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी किस तरह से पॉसिबल हो सकती है. और अगर आपकी एज 55 से कम है तो आपकी पीआर भी पॉसिबल है, और आप अपनी फैमिली के साथ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी में भी जा सकते हैं. कोमल रैश पूछ रहे हैं जी, सत श्री अकाल जी, जनरल ड्रॉज कब तक कंडक्ट हो सकते हैं. कोमल जी, ड्रॉज ऊपर जाने वाले हैगे ने, बिकॉज रिसेंटली 539 थे ड्रॉज गए ने. वी माइट सी 2 more draws. They may not be as big as the previous 4000 draws. So उसके कारण स्कोर नीचे आने वाला इमीडिएट टाइम में मुझे नजर नहीं आ रहा. I would prefer to see score coming down, but I don't see it coming down. सो आप अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सीआरएस में कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर काम कीजिए. तनिष्क लिख रहे हैं जी, हेलो सर, expression of entrant point as 58 and I'm working in a restaurant on LMIA. So you think I can apply for a PNP in Alberta? Absolutely जी, अप्लाई कर सकते हैं. एंड LMIA वालों के लिए तो अल्बर्टा में इस टाइम पे ऑप्शन भी एग्जिस्ट करने वाली है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्ट्रीम में. तो 58 इज अ गुड स्कोर. लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, एंड वी आर होपिंग कि दिस वीक वी शुड सी सम ड्रॉ कमिंग अप इन अल्बर्टा एज वेल. ऋषभ कोमल सिंह, सत श्री अकाल जी, जनरल ड्रॉज कब तक कंडक्ट हो सकते हैं. आपकी जवाब दे दिया मैंने जी. क्या है जी आपके पास क्वेश्चन? सर Lalita Liva is asking, sir, I am in Surrey. I was food supervisor in India, 4 years of experience. Here I am on vulnerable work, open work permit. What can I do now? 6.5 bands. अगर आपके 6.5 बैंड्स हैं और वल्नरेबल के ऊपर हैं तो यूज दिस. ये बीसी में, सरी में है, तो आपको टेक्निकली ब्रिटिश कोलंबिया में आपका स्कोर प्रोबेबली इतना टच नहीं होने वाला कि आप क्वालिफाई कर जाएं. सो मूव टू नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रांसविक, न्यू फाउंडलैंड. अगर आपको, बिकॉज ओपन वर्क परमिट है, वल्नरेबल वर्क परमिट है, तो यू हैव दोज ऑप्शंस. गो टू दोज प्लेसेस. अल्बर्टा में चले जाइए, रूरल कम्युनिटी में, वहाँ पे आपकी पीआर पॉसिबल है. सस्केचुअन में चले जाइए, मैनिटोबा में चले जाइए, वहाँ पे आपकी पीआर पॉसिबल है. सो अपनी ऑप्शंस को देखिए कि आपके पॉइंट्स कहाँ पे इतने बन रहे हैं. अगर आप हमारे से इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं तो सेंड अस योर कंप्लीट डिटेल्स एट info@iccimmigration.ca. अपना वर्क परमिट, अपना रेज्यूमे, अपने आइलेट स्कोर, अपनी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, सारी चीज़ें भेजिए. और अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपको सजेस्ट कर सकें कि कैसे आपकी चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं. जी.
So Shabina745 is asking, I'm working 9 months in tier 2 store supervisor, but I got offered in tier 3 and it's a skilled work. What should I do? दोबारा पूछें. Sir Shabina745 is asking, I'm working 9 months in tier 2 store supervisor, but I got offered in tier 3 and it is skilled work. What should I do? अगर आप स्किल्ड वर्क में आपको जॉब मिली है तो दैट्स अ गुड थिंग, बट मेक श्योर कि उस स्किल्ड जॉब में आपके रेड सील की या ट्रेड सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, कहीं बाद में एप्लीकेशन आपकी पीएनपी डिनाई ना कर दे उसकी लैक की वजह से. अगर आपके पास वो रेड सील या ट्रेड सर्टिफिकेशन है, एब्सोल्युटली स्टे इन दैट. और अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ ईमेल करके या फ़ोन करके शेयर कीजिए एंड गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस. So she is saying, ON19, my score is barely 450. Is it better to join skilled trade? आपको देखना है कि सो बेसिकली 450 का मतलब है कि आप ग्रेड 12 करके आई हुई हैं, इज दैट सो? अगर वो है इंस्टांस है तो आप देखें कि आप स्कोर कैसे बढ़ सकता है, आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देने को तैयार है या नहीं तैयार है. तो वर्क ऑन दैट और मेक श्योर दैट यू डू अ प्रॉपर जॉब. So Shreya29K is asking, why is the study visa process so slow currently? It's been so many weeks. अभी बच्चा ये और स्लो होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. Sir, Spicy is asking, marriage of convenience, only way for an Indian to get a PR. What else? Marriage of convenience should never be a way for any nationality to get permanent residency. Stay away from these things because कई बारी ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने नज़र आती हैं वो eventually लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देती हैं. और in case the government has become very serious and they're aggressively going after those people who are in Canada. We have seen lot of raids by CBSA as well, and government is going after a lot of people. So do not do anything hanky panky that will eventually affect you in your endeavor towards your permanent residency. Sir Dawson Francis is asking, I am on PR, can I invite my elder sister? Absolutely. If you want to invite any of your relatives, any blood relatives, any friends, you can go ahead and do that. There is nobody who can stop you from inviting your blood brother or sister into Canada. And basically, you don't need an occasion as well to celebrate with your family, that way. आप अपने पेरेंट्स को मिलना चाहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को मिलना चाहते हैं, भाइयों बहनों को मिलना चाहते हैं, दोस्तों को मिलना चाहते हैं, कॉल देम. एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. Sir Zay is asking, I have only 11 months left, so I'm going for in-demand stream, which requires 10 months. Is it the right option? It may be a right option. आप अपनी डिटेल्स शेयर, आपके पास डू यू हैव एन एम्प्लॉयर दैट इज रेडी टू सपोर्ट यू इन योर इन डिमांड कैटेगरीज? आर वी टॉकिंग अबाउट ओंटारियो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस? बिकॉज अगर ओंटारियो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की बात कर रहे हैं तो जॉब आउटसाइड ऑफ जीटीए होनी चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी. और एम्प्लॉयर को फॉर्म 0233 आपको भर कर देना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे. विदाउट दैट फॉर्म योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द इन डिमांड स्ट्रीम. Sir Prakash is asking, sir, is it true that only tier 0 can apply for the SOWP now? My husband is in UAE. There are certain refusals we have recently seen where the spouses, if they are not in the management role does not mean sirf tier O. It can be tier 8, it can be tier B, it can be uh, tier 0, tier 1, tier 2, tier 3 even. So these are also considered management roles. Even supervisor is a management role. So yes, there are some refusals, but we have recently seen as well. People have approached us with those refusals. So इसका अकेला tier 0 नहीं है. Sir M. Ahmed 069 is asking why SDS processing time is very slow. It was mentioned on their website that you will get the decision within 20 calendar days.
It's difficult for me to comment on the timelines because there are a lot of things that impact the timelines. आपकी एप्लीकेशन किस एम्बेसी में प्रोसेस हो रही है, किस ऑफिस में प्रोसेस हो रही है, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गेट इन, किस ऑफिसर को असाइंड है, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गेट असाइंड। एब्सोल्युटली एसडीएस में टेक्निकली इट्स ओनली 20 वर्किंग डेज, बिजनेस डेज का टाइम है। Uh, Guns1107 is asking, my mother has extension for super visa, but she went back and came again. So now we again have to extend, or automatically we'll get it for 2 years extension. आज की डेट में सुपर वीज़ा में जो एक्सटेंशन मिल रही है वो 5 साल की मिल रही है, 5 साल का स्टे लीगली है। तो अगर उन्होंने एट द पोर्ट ऑफ एंट्री इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट सारा कुछ प्रेजेंट किया था ऑफिसर को, तो टेक्निकली शी माइट हैव एन एक्सटेंशन, शी माइट हैव अ लीगल स्टे फॉर 5 years, इफ नॉट इट्स जस्ट 6 months। Sir, Amax.n is asking, sir, do you have any vacancy in construction? If you have, please let me know in what provinces. कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो ओपनिंग्स हैं वो नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक में हैं। अगर आपके पास रेनोवेशन का, कंस्ट्रक्शन का, कारपेंट्री का एक्सपीरियंस है तो वी हैव एम्प्लॉयर्स एंड दे विल असिस्ट यू इन योर परमानेंट रेजिडेंसी एज वेल विद पीएनपीज। तो अपना रेज्यूमेज हमें शेयर कर दीजिए एट info@iccimmigration.ca, 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 या फिर हमारे ऑफिस में कॉल करके या अपॉइंटमेंट बना के आकर मुलाकात कर लीजिए। हेड ऑफिस हमारा मिसिसागा में है। फ़ोन नंबर इज़ 905-461-2424, 905-461-2424। व्हाट्सएप नंबर है 647-850-9000, 647-850-9000। हमारे पास ओपनिंग्स इस टाइम पे इवन नर्सेज के लिए, केयर गिवर्स के लिए भी हैं। अगर आपके पास बैक होम बीएससी नर्सिंग की हुई है, जीएनएम की हुई है, लीडरशिप में काम किया हुआ है, केयर गिविंग में आपका एक्सपीरियंस है, तो वी हैव ओपनिंग्स इन लॉन्ग टर्म केयर होम्स इन नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, ओंटारियो एंड अल्बर्टा, and employers can assist you in your permanent residencies as well. So send in your resumes, interview hogi, if it goes through, go and work for that employer and get qualified। बहुत सारे ऐसी नर्सेज हमारे पास आती हैं जिन जो हु वांट टू वर्क ओनली इन ओंटारियो, बट जब वो स्कोर देखते हैं तो उनका स्कोर 370 पे, 375 पे। अब रिसेंट स्कोर जितने भी हेल्थ केयर ड्रॉज ओंटारियो पीएनपी ले रहा है वो 400 प्लस चल रहा है। सो अगर आप ओंटारियो में काम भी कर लेंगे, यू at the mercy of Ontario PNP. If you get picked up at 350, great. If not, आपकी एप्लीकेशन पूल में पड़ी रहेगी। So there is no fun of working here. अपना स्कोर्स की दैट शुड बी योर डिटर्मिनिंग फैक्टर कि मैं कहाँ पे काम करूँ ताकि मैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई कर सकूँ। हमारे पास आइए, अपना केस डिस्कस कीजिए, वी विल गिव यू स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस whether it is Ontario that will work for you, Alberta, Nova Scotia or New Brunswick. Sir, Anjali Sharma is asking, is there any chance of PR under healthcare sector working as PSO? Absolutely, ji. Absolutely, there is a lot of options for you. So she's asking, do you have any in Ontario who will help me in PR residency? नर्सिंग है क्या, हेल्थ केयर, राइट? PSW. अगेन आपका क्वेश्चन मेरे प्रीवियस आंसर के साथ, आपका ये क्वेश्चन आपके आंसर के साथ होना चाहिए जो मैंने आई जस्ट सेड। अगर आपके स्कोर 400 प्लस है तो ओंटारियो कैन बी एन ऑप्शन, 410 प्लस है, 415 प्लस है, एब्सोल्युटली ओंटारियो इज एन ऑप्शन। अगर कम है, 400 से नीचे है, तो मूविंग आउट टू अदर प्रोविंसेस इज एन ऑप्शन। वी हैव ऑप्शंस एट दिस मोमेंट। सेंड अस योर रेज्यूमे और आके मुलाकात कर लें। Sir, Dheeraj Sharma is asking, do you think category based draw will come down, trade categories draws? ओंटारियो की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आगे आने वाला समय 400 से नीचे आने वाला स्कोर। मूविंग आउट माइट बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो अगर आपके पास ट्रेड्स में कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, कारपेंट्री का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रिकल का, एचवैक का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास रेनोवेशन का एक्सपीरियंस है, जनरल मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस है, तो वी हैव ओपनिंग्स इन नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, एंड एम्प्लॉयर कैन हेल्प यू। Sir, Kalon Ramneet is asking, what is the timeline for super visa? Anywhere between 4 weeks to 16 weeks. Sir,
Tonirel is asking how many years PGWP for a diploma degree in cybersecurity. After, if you are putting in an application for a study visa, cyber security falls in the streams. So hopefully it will be 3 years. Sir Lad is asking, I have a 2 year experience as a medical lab technician back home. Is this helpful for me in PR? Absolutely, you might be eligible to submit your application for permanent residency even now. And there are chances that you might get picked up. Calm down and discuss your case with us. So, even if you have experience from back home in any healthcare fields, any trade fields, come down and discuss it. Don't wait for your completion of your studies. Don't wait for completion of 1 year of Canadian experience. You might be eligible today as well. So, come down and discuss your options. Sir Rahul Kumar is asking, can refugee applicant sponsor his spouse from India for SOWP? Technically, no. There are very less chances because you are already dependent on Canadian government. You are already on assistance from the Canadian government. So officers know that आप पहले ही government से funds ले रहे हैं, assistance ले रहे हैं. So don't want to give out a visa and आपकी wife भी आके यहाँ पे claim कर ले. तो absolutely chances are minimal. ये नहीं कि नहीं लग सकता, absolutely लग सकता है, but the chances are minimal. Sir, Sanish official is asking, sir, do we need PAL for masters? मास्टर्स के लिए पीएएल की अभी रिक्वायरमेंट आ गई है, आने वाली है, अभी 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 इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है. सो आज की डेट में आप पाल के उसके बिना भी जा सकते हैं मास्टर्स में, पाल के बिना. Sir, Dheeraj Sharma is asking, NOC specific draws coming or not, sir? वेरी डिफिकल्ट टू से. आएंगे बट कब आएंगे? जो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज हैं वो आ रहे हैं. अभी हमने जितने भी ड्रॉज देखे हैं मोस्टली तो वो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज ही हैं. बट यस, ये दिस इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट टाइम ऑफ द ईयर जब ड्रॉज कम होने शुरू हो गए हैं. तो एब्सोल्युटली ये आगे ड्रॉज कम होंगे अगले 2 महीने में और उसके बाद फरवरी के बाद रिज्यूम होंगे. Sir, Prakash is asking, I am in Saskatchewan and in LMI based job as a sales associate. Can I apply for SOWP? दोबारा बोलें. Sir, Prakash is asking, I am in Saskatchewan and I am in LMI based job as a sales associate. Can I apply for SOWP? एब्सोल्युटली कर सकते हैं जी. Sir, Amy is asking, do frequently travel as a truck driver need to fill each entry in the citizenship application? That's right. Sir, Kalon Rabneet is asking, I applied for mother's super visa and it's been 2 months, no result yet from India. Please suggest. Just be patient and wait. Sir, he's asking for the timeline. सुपर वीजा का एनी कैन बी एनीवेयर बिटवीन 4 weeks to 16 weeks. Sir, IK is asking, can 18 years old apply for their grandparents? Absolutely, if they meet the income requirements, they can. Sir, Atinder Kano is asking, I have 494 in CEC. Should I go for LMI? 494 is a very good score. It all depends कि अगर आपका वर्क परमिट अगले 1 साल के अंदर कंप्लीट हो, एक्सपायर हो रहा है, it's valid only for 1 year, you should consider that option as well. Sir, Big Boss is asking, I got parents and grandparents program PR email invitation, but I missed it because it went to spam. What should I do? बड़ी इतने important documents होते हैं, you cannot be careless with such things. And you have to be very, very careful. If timeline has expired, you will have to be
I don't know, this is something criminal, like you lost that chance just because of being careless. I don't know what to answer you. Sir, Prabsim Singh is asking transportation का draw कब आएगा? अब तो नेक्स्ट ईयर ही लग रहा है. जो सुपर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम इंडिया से चल रहा है, टेक्निकली ऑन द वेबसाइट्स एवरीथिंग इट शोज एट 7 months, 7 weeks. But what we have experienced personally is that it is taking anywhere between 4 weeks to 16 weeks. Sir, Tukir Speaks is asking what is the best time to apply parent visa, visit visa for students from Pakistan? जब आपकी कॉन्वोकेशंस ड्यू हैं तो उस टाइम पे कीजिए, बिकॉज दैट इज द टाइम यू आर शेयरिंग योर अचीवमेंट्स विद योर पेरेंट्स. जवेद खान लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम साहब जी. सुहेब हैदर लिख रहे हैं विच स्टडी फील्ड इज सूटेबल फॉर वर्क परमिट फॉर HVAC versus studying or mobile repair. HVAC is one of the best things you should be going in for. सुहेल भाई इस टाइम पे ठीक है जी. Sir, that one is asking how can we move from Canada to US? मैं यूएसए की इमिग्रेशन के साथ डील नहीं करता. यू विल हैव टू स्पीक टू सम लॉयर और अ कंसल्टेंट हु डील्स विद यूएस इमिग्रेशन. Sir, Andrew is asking hello sir, मैं TVR मैं SOWP साढ़े ऑफिस कॉल करो ब्रदर जी, तुम्हें तो सीधी एडवाइस ले लो. Sir, Navneet is asking tourist visa का time frame कितना है? We applied to our parents in August starting and we are still waiting. So August is say how many weeks? 6, 4, 5, 6 weeks. That's not too much. So anywhere between 4 to 16 weeks. That's what the processing time is. So Zeb is asking, it's been 18 days since my husband got pre-approval letter, arrival letter. How long it takes for passport request? It can be anywhere between 2 weeks to 16 weeks. So Naveen is asking, tourist visa का time frame कितना है? We applied for our parents in August starting and we are still waiting. 114 business days का टाइम चल रहा है जी. Sir, Gurdas Sidhu is asking, trucking draw. I don't know. Keep your fingers crossed. अगर आपका स्कोर 435 से 437 से ऊपर है, यू हैव चांसेस, बट स्कोर ऊपर भी जा सकता है. तो जितना स्कोर अपना इम्प्रूव कर सकते हैं CRS, उसके ऊपर काम कीजिए. अगर और एडवाइस चाहिए तो कम टू द ऑफिस एंड गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस. Sir, Sharma Love 722 is asking, can you guide me what's the time process if we apply for the PR? एब्सोल्युटली इट विल डिपेंड कि आप किस में क्वालिफाई कर रहे हैं. तो उसको लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे ऑफिस में कॉल कीजिए, आके मुलाकात कीजिए, इन पर्सन मीटिंग कीजिए, एंड वी विल वर्क ऑन योर ऑप्शंस एंड सजेस्ट यू कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट वर्क कर सकते हैं और उसका टाइम बता सकते हैं. Sir, Bobby UK90 is asking, sir, waiting for TRP and work permit extension since 2023. What should I do? आप कनाडा में हैं, यूके में हैं? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी अगर कनाडा में है तो. आई डोंट नो कि आपके केस में क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको इतना टाइम लग रहा है. उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हमारे साथ ऑफिस में कॉल करके या ईमेल करके शेयर करनी पड़ेंगी. Sir, Gurdas Sidhu is asking 467 score in trucking. Is it good? Absolutely, it's a good score transportation में. Sir, Samar Sarinder is asking, I'm truck driver at close work permit in Alberta. My wife SOWP denied, saying your spouse provided insufficient information to prove that you qualify under IFP. एब्सोल्युटली बहुत सारी एप्लीकेशंस इस हमारे इस स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए इस वजह से डिनाई हो रही हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड. सो जब भी आप एप्लीकेशन करने जाओ, प्रोवाइड इनफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दैट सपोर्ट आपकी जॉब, आपके रिलेशनशिप, ताकि ऑफिसर को डिसीजन लेने में टाइम ना लगे और वो पॉजिटिव डिसीजन ले. सो अगर किसी की भी एप्लीकेशन ऐसी रिफ्यूज हुई है, गेट इन टच विद आईसीसी इमिग्रेशन टीम, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए एंड वी माइट बी आपके लिए जरिया बन सकते हैं इन गेटिंग योर स्पाउसेस हियर.
Sir, live like Mio 70 is asking. I applied for spousal open work permit inside Canada. It's been 7 months. I didn't get any response. 7 months the processing time spousal open work permit का है almost inside Canada का uh, let me just give me 1 minute. 138 बिजनेस डेज का टाइम है जी. 138 बिजनेस, एक महीने में 22 बिजनेस डेज होते हैं. सो 138 मीन्स यू आर ऑलमोस्ट एट अ स्टेज जहाँ पे आपका डिसीजन आने वाला है. Sir, Singh is asking, Sir, TRV को 45 days हो गए, no response yet. अभी आप वेल विद इन टाइम है. Sir, Simran 1234 is asking, when can we expect the next skill trade score? My score is 394 from Canada. 394, think of options where you can improve your scores. 394 Ontario में टच होने वाला नहीं है अब. 400 प्लस चल रहा है एंड आई डोंट थिंक सो कि अगले 6 महीने से पहले ये 400 से नीचे आने भी वाला है. So RDE is asking, can I apply for PR? I have support worker experience inside Canada. एब्सोल्युटली कर सकते हैं जी, बट अभी एप्लीकेशन सपोर्ट वर्कर की नहीं ली जा रही, तो 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद अपनी पीआर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं. अख्तर तो बस लिख रहे हैं, हाँ I'm in BC on a closed work permit but my BC PNP is 73. I'm an employed status. Employer is willing to give me job in Ontario. Can I apply for another work permit? Also PR easier than BC. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस जॉब में आप आ रहे हैं, एम्प्लॉयर किस में, बिकॉज 73 में बीसी तो पिक होने वाला नहीं है. ओंटारियो भी पिक होगा या नहीं होगा, बट गेट इनटू स्टेटस फर्स्ट. एम्प्लॉयड स्टेटस से अगर एम्प्लॉयर जॉब ऑफर दे रहा है, एलएमआई दे रहा है, तो गेट इनटू द स्टेटस वेदर इट इज इन बीसी और ओंटारियो एंड देन कंसीडर के मेरी पीआर की ऑप्शन क्या वर्कआउट हो सकती हैं. Sir, call is asking, skill draw 400 के नीचे आएगा या नहीं? आई डोंट थिंक सो कि अगले 3 से 4 महीने से पहले वो नीचे आने वाला है. Sir, Bobby K90 is asking again. CIC took 1 year extra after 1 year waiting for spouse sponsorship due to COVID. Can we appeal? अभी तो आप अपील वाली डिसीजन में नहीं है. आप अपनी वेब फॉर्म क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन की अपडेट लेने की कोशिश करें और अपने मेंबर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें कि व्हाई इज योर एप्लीकेशन टेकिंग सो लॉन्ग. ही विल एक्चुअली बी इन अ पोजीशन टू सजेस्ट यू कि क्या वजह है कि आपकी एप्लीकेशन में इतना टाइम लग रहा है. Sir, Jazz is asking, when do we expect the next healthcare express entry drop? We are expecting it very soon. I think we might see one more draw before the end of the year. Sir, Zeb is asking, it's been 10 months since I sponsored my husband. How long does it take? The processing time is anywhere between 11 to 13 months if it's a straightforward application. If it's a complicated application, it can take further more time. इसीलिए जब आप application spousal की put up करें तो इस तरह से कीजिए कि you address all concerns that can come up. Sir, Sharma Love 722 is asking, my spouse already lived there in Canada and she is PR over there. So can I apply for the TR visa and how much time does it take? आपको तो स्पॉन्सरशिप हो जानी चाहिए. आपकी स्पॉन्सरशिप आपने पुटअप क्यों नहीं की? आपकी स्पाउस अगर परमानेंट रेजिडेंट है कनाडा की, शी शुड अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, बट शी हैज़ टू बी इन द कंट्री इन कनाडा टू पुट योर एप्लीकेशन अप. तो उसके ऊपर सोचिए. Sir, Bobby UK 90 is asking again, MP saying it's under review for TRP and work permit extension. I need lawyer. Can you file my appeal? Send us the complete details and we might be able to suggest you. Sir, Gcore 94 is asking, if someone is on LMI waste work permit, can they appeal for open work permit after submitting federal? Yes. Sir, Alif Momin is asking, my citizenship application. एक मिनट, इनको पहले मैं सुजेस्ट करूंगा जो पहला क्वेश्चन था कि काम डाउन एंड सीक कंसल्टेशन फ्रॉम योर लॉयर. जिसने आपकी एप्लीकेशन पुट अप की है, अगर हमारे से एडवाइस लेना चाहते हैं तो स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट और कम टू द ऑफिस एंड लेट्स
let us consider your options कि आप work permit open के लिए eligible हैं या नहीं है. Sir, Alif Momin is asking, my citizenship application is taking too long. It's been 14 months. My background is still processing. कई बारी आप कितनी कंट्रीज में रहे होते हैं कि इट कैन टेक टाइम. सो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज. जस्ट वेट. Sir, Harsimrat 38 is asking, any chance family connection draw EOI Alberta 61 points? एब्सोल्युटली. Sir, Sohib PB19 is asking, LMI per support timeline in SK. We applied on July 11th. Please reply. You're almost close to your application getting processed. Sir, Prab Sandhu is asking, I just want to know if we get our portal too, is it possible to leave country because it's urgent? You should avoid. If you have no options, yes, you can. Because you have to look at the options. How would you come back to the country? अगर यूएस का वीज़ा है and that's an option that can work for you. It all depends कि how long your stay is going to be. अगर आपके पास वीज़ा है, you have the visa to enter back into Canada, you can still do that. Sir, in spousal PR tracker, both sponsor and PA eligibility completed. What does that mean? Not received letter. Just be patient. Sir, Sohib PB19, Sir G Core 94 is asking, where is your office? हमारा हेड ऑफिस मिसिसागा में G1137 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा. इट इज क्लोज टू डिक्सी ग्रूपर. सो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कॉल आवर ऑफिस 905-461-2424. और जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, खासकर ग्रेड 12 करके आए हुए हैं, नर्सिंग की बैकग्राउंड है, ट्रक ड्राइविंग की बैकग्राउंड है, कंस्ट्रक्शन की बैकग्राउंड है, कारपेंट्री की बैकग्राउंड है, कैशियर की बैकग्राउंड है, कुक्स की बैकग्राउंड है, शेफ्स की बैकग्राउंड है, तो हमारे पास कुछ ओपनिंग्स हैं जहाँ पे आप फ़ायदा ले सकते हैं. काम डाउन एंड डिस्कस योर केसेस एंड ऑप्शंस. एंड अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पीएनपी में एलएमआईए में हेल्प करने के लिए तैयार है, आपका वर्क परमिट खत्म होने जा रहा है, कम डाउन एंड डिस्कस. कोई भी रिसेंट चेंजेस आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, कम डाउन एंड डिस्कस दैट एज वेल. इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गेट इन टच विद आईसीसी इमिग्रेशन टीम एंड गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस. और जाने से पहले बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू. हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो एंड टेक केयर ईच वन ऑफ यू. थैंक यू.